हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल बाय नीलम। मेरा नाम नीलम भाटिया है और इस चैनल पर हम लोग एक वीडियो सीरीज रन कर रहे हैं वेयर वी आर डिस्कसिंग certain important concepts of Indian polity which are often ignored but are very important from your exam perspective। और आज का टर्म है पॉपुलर सॉवरेनिटी, जो बहुत सिंपल लगता है बट वी ऑफन डोंट अंडरस्टैंड इट्स रियल मीनिंग, एंड दैट्स द आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज कि वो कॉन्सेप्ट जो सीमिंगली इजी है, इग्नोर्ड है, उनको हाईलाइट किया जाए ताकि आपकी पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग हो जाए। This is the eighth video, so mark your attendance and let's get started. So the term that we are discussing today is popular sovereignty. Now to understand this term better, let's break it down. Popular comes from the word populus. Popular जो है वो शब्द आता है from the word populus, which means people. तो popular का मतलब यहाँ किसको डिनोट कर रहा है? To the people. And sovereignty का मतलब होता है the freedom to take your decisions. तो अपने फैसले लेने का अधिकार सॉवरेनिटी कहलाता है। दैट इज व्हाई वी से दैट इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन। नाउ लेट्स कंबाइन द टू टुगेदर। पॉपुलर सॉवरेनिटी यानी कि सॉवरेन यानी कि डिसीजन मेकर्स आर एक्चुअली आर द पीपल। यस, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली पॉपुलर सॉवरेनिटी इज। तो पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब होता है हु हैज द अल्टीमेट पावर, हु इज द अल्टीमेट डिसीजन मेकर इन अ डेमोक्रेसी। So if somebody asks you who is the ultimate decision maker in the democracy, it is the people, at least on papers. So why ultimate? Because हो सकता है आपने किसी को अपना representative बनाया है, दिख रहा है that the government is operating the country, but ये government कहाँ से आई है? It has come from us. So government comes from people, and therefore who is the ultimate sovereign? Who is the most important entity? It is the people. So what is popular sovereignty? When people hold the ultimate power, and this is a prime feature of democracy, क्योंकि democracy की definition याद करिए, government of the people, for the people, by the people. तो government will exist only because people will allow it to. So tomorrow अगर elections में the government is voted out, then you will have to sit at home, and that means government has to work according to the will of the people. So who is the sovereign? It is the people who are sovereign. अब इसके कुछ न्यूआंसेस समझ लेते हैं। जितना भी पॉलिटिकल पावर है, वेयर इज दैट पॉलिटिकल पावर कमिंग फ्रॉम? एट द एंड ऑफ द डे द पॉलिटिकल पावर इज कमिंग फ्रॉम द पीपल। सो हु इज सॉवरेन? इट इज द पीपल हु आर सॉवरेन। अब क्या इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है? क्या गवर्नमेंट कोई भी लॉज बना सकती है? नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज देयर इज पॉपुलर सॉवरेनिटी, गवर्नमेंट कैन नॉट कम अप विथ एनी लॉज दैट पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग। पर आप कहोगे मैम लोग तो कुछ नहीं कर सकते अगर लॉस से खुश नहीं है तो। सो पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट कहता है दैट इफ यू आर डिससैटिस्फाइड यू हैव टू ऑप्शंस। वन, डेमोक्रेसी परमिट्स यू टू कम अप विद मूवमेंट्स। सो इफ आई एम हैप्पी, फाइन। इफ आई एम अनहैप्पी विद द फार्म लॉज, देयर वाज अ ह्यूज प्रोटेस्ट, मूवमेंट्स। सो इफ यू आर डिससैटिस्फाइड यू कैन कम अप and raise your voice against it. And second, there can also be the idea that in the next elections you can vote the people out. So next time you vote somebody else, and that's how you become powerful, and that is what the concept of popular sovereignty is. Now if you ask me why is this so important, so there are three major reasons. One, because अगर देश में popular sovereignty है तो सबसे important कौन हो जाएगा? It is going to be the citizens. So popular sovereignty empowers the citizen. Because now people shape policies and leadership, people decide who are going to be their leaders. Second, क्योंकि popular sovereignty है, so the government is not unlimited, government is limited, and there is a check on the authority. Rulers, the leaders are not king that they can do anything. They are answerable. Answerable to whom? Answerable to the people, because they are our representatives. And who is ultimate sovereign? It is the people, and that is why we call it popular sovereignty. Another concept, it protects rights. Ma'am, rights of whom? Of the people. Imagine a government that is unlimited. Imagine a government that is not to care for people. Then no rights of the people would be respected. But because power lies with the people, their rights have to be respected. और अगर कभी आपके rights violate भी होते हैं, eventually they are corrected because of the presence of judiciary. So if I summarize it for you, simply understand what is popular sovereignty. Populous, people. Sovereignty, the freedom to take your own decisions.
So, who is the ultimate sovereign in a democracy? The sovereignty lies with the people. Because who elects the government? It is the people who elect the government. Now, I have a question for you. If you read Indian preamble, there are some words in the Indian preamble that denote popular sovereignty. वो वर्ड आपको मुझे बताने हैं वो कौन से शब्द हैं in the preamble that proves that India has popular sovereignty. Let me know in the comment section. Take care and I see you in the 9th video. Happy learning!